So, welcome to lecture 9 of NLP, Natural Language Processing Theory and Applications. Okay, so today we will wrap up our discussion on feed-forward neural networks. We started discussing feed-forward neural networks as extensions or of the logistic regression model. So, we'll complete the discussion primarily focusing on the equations and the notation. Because obviously most of you have studied feed-forward neural networks elsewhere. So this will be like a refresher. We will then quickly go over the evaluation of text classification. So this would be somewhat similar to the evaluation for classification in general, but again, it is important. Evaluation is always important, so we'll go over that as well. And then after that, we will, if we have time, we will be starting with dense embeddings or dense representations, and that would lead us to the discussion of word to vec. So that is basically the agenda for today. So we had a scheduled quiz today, but by request of many of you, we have moved it to Wednesday. So the quiz will contain all stuff till the last lecture. It will not contain this lecture, although this lecture, as I said, would be mostly refresher for most people. So the quiz would be on Wednesday towards the end of class. Any questions? All right. So are there any questions from the previous lecture? No, today's lecture will not be included in the lecture on in the quiz on Wednesday. We will include it in the follow-up quiz in about 2 weeks from now. तो वेनेसडे को जो पहले अनाउंस किया गया था थर्सडे लास्ट वेनेसडे तक जो लेक्चर्स हुए थे उसी वही इंक्लूड होगा. Anything else? So we were discussing feed-forward neural networks, and we mentioned that feed-forward neural networks essentially are logistic regression models, one after the other. So we talked about logistic regression, a single logistic regression output Z as being a vector W in a product with X plus a scalar B. So this is actually the equation of the aggregated output of a single neuron or single computational unit. And to make it a actual computational unit for a neural network, uh, we apply a nonlinear activation function on it. So let's say the output A would then be G of Z. All right, so this is a single computational unit, and as you can see, if you take G as a sigmoid function, this is also the equation for a binary logistic regression model. Okay. If you take G to be a softmax function, then this is the equation for a multinomial logistic regression. So in the context of a neural network, let me show you the figure. So a binary logistic regression, you can also represent it as a network. It would be a one-layer network. It just has inputs, X, and it has
a single output computational unit, which is, you can say, the output layer. So you have connectivity from the input to that single computational unit. And through that connectivity, you're getting that operation of W dot X plus B. So there's a connectivity for bias, which has an input that is fixed to +1. So as you know, in the equation, bias B does not have an X with it. So it has an input that is fixed as +1. Okay? And then we have all the various x's, x1 to xn, depending on how many inputs that you have. They will be multiplied with the corresponding weights. The bias would be added, and then we apply the sigmoid function, and then we get the output. So this is a binary logistic regression model as represented as a neural network. So this does not have multiple layers in between. But in general, when we talk about feed-forward neural network, we do not restrict ourselves to just one layer, which would just be a logistic regression, as we'll see shortly. So similarly, so if you talk about multinomial logistic regression, you can represent it as a one-layer neural network. So now you have the same input x's and b, x's and +1, and they have their corresponding weights b, and all the w's get multiplied with the corresponding inputs. They get summed up, and then they go through a softmax function. So now you see that you have multiple units at the output layer. So softmax is computed over multiple outputs, zk, z small k. So you have multiple equations for each node. So each node you can say is uh, one of k, capital K. So softmax applies on all of them and gives an output which is normalized, which we typically call yk, y hat k. Okay. So this is a multinomial logistic regression represented as a neural network. This is a one-layer neural network. Okay. So a one-layer neural network is equivalent to your logistic regression. So which is not what we are interested in. We have already talked about logistic regression before. So what is a feed-forward neural network? It has an input layer as before, and then we have multiple hidden layers in between layers, and then the output layer. A logistic regression just had an input and an output, no hidden layers. Okay? And the simplest feed-forward neural network would have one hidden layer. Okay? So let me show you that figure as well. So this is a two-layer network. Remember, when we are counting the number of layers in a neural network, we do not count the input because the input do not have any computational nodes. They just have values coming in. Okay? So this is a two-layer, one hidden layer and one output layer. And this is have one unit as the output layer. So kind of doing binary classification. Okay? So the hidden layer would have an activation function which is typically tangent hyperbolic and uh, tangent hyperbolic and uh, rectified linear unit. I'll write the equations for this shortly and show you the graph as well. But this is the general architecture that I wanted to highlight. The output layer would typically have the sigmoid or the softmax. Sigmoid when binary classification कर रहे हैं and one unit होगा. Softmax if you have multiple classes and multiple units. So this would be the multiple nodes in the output layer for multi-class classification. Usually in practice, we tend to prefer this model, even if it is binary classification. Meaning that ये binary classification के लिए हम दो नोड ले लेंगे, ठीक है? और जिसका max y होगा, y prime होगा या y hat होगा, वो class होगी. So remember when we did with a single layer, we knew that the other was one minus of that. ठीक है? But to make
both models uniform in your computation, तो बाइनरी के लिए भी हम वही आर्किटेक्चर लेते हैं but with two nodes at the end rather than just one. ठीक है, सो हमारी प्रोग्रामिंग, हमारी इम्प्लीमेंटेशन आइडेंटिकल हो जाएगी इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज बाइनरी क्लासिफिकेशन और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन. ठीक है. So non-linearity is very important in neural networks. We had already talked about the sigmoid function. We have already talked about the softmax function. But in a feed-forward neural network, in the hidden layers, in the intermediate layers, the usual preferred activation functions are the tangent hyperbolic and the rectified linear unit. The rectified linear unit is a more recent inclusion, and I will briefly discuss why this has become more popular. But both of them, both these equations are non-linear. Rectified linear unit is non-linear just because it has a horizontal part and then a linear part. So there is a change, sudden change. So that's why it's non-linear. So non-linear का मतलब ये है कि it doesn't remain the same, it doesn't retain the same behavior throughout. The behavior इसका change हो रहा है. And of course, the tangent hyperbolic is a S function just like the sigmoid function, but now the max and min are +1 and -1. ठीक है? So let me discuss these two in a slightly bit more detail. So the tangent hyperbolic of Z, if you want to write it in terms of uh, expand it out, so it is exp of Z minus exp of minus Z divided by exp of Z plus exp of minus Z. And the range, of course, as I said, is -1 to 1. It is continuously differentiable, and it differential becomes close to 1 as you approach 1, and it close to and also -1. And it's, of course, its value is 0 at Z is equal to 0. So why? Okay, let me write the other one as well. So rectified linear unit of Z is simply 0 when Z is less than equal to 0. Okay? And it is Z when otherwise, simply otherwise. Okay? So meaning that if Z is less than 0, तो वो 0 होता है. जब Z पॉजिटिव होने शुरू होता है तो it's a linear function with a unit gradient. Gradient is 1. So this equation has become more popular in recent years because we typically now have multiple hidden units. So this somewhat improves the computational performance as well as it avoids the issue of the vanishing gradient problem. So I don't want to go into great detail of this. Can anyone tell me or has knowledge of this? What is the vanishing gradient problem? Obviously आपने नाम तो सुना होगा. So what is the gradient of the rectified linear unit when Z is get okay? So what is the gradient of the rectified linear unit when Z is greater than 0? So gradient
So the gradient of the rectified linear unit, as you can see in this graph, when z is greater than 0, yes. So, okay. So the gradient of rectified linear unit is 1 always when z is greater than 0. But if you look at the tangent hyperbolic, as z increases and the value of tangent hyperbolic approaches 1, the gradient becomes almost 0. Okay? So when the gradient becomes 0, as for those who again remember the back propagation depends on gradient. And of course, also we mentioned in the last lecture, the gradient descent approach or the stochastic gradient descent approach, it uses the gradient. If the gradient becomes 0, your weights or updates would not occur. So that becomes a problem, especially if you have large network. Large network का मतलब क्यों है कि आपके पास मल्टीपल लेयर्स हैं, शुरू में वैल्यू z बड़ी होती हैं, आगे जाके छोटी होती जाती हैं, आगे वाली की चेंजेस आती रहेंगी, जब z बड़ा होगा वो सैचुरेट हो जाएगी, इधर का चेंज नहीं होगी. So the weights closer to the start of the network would not change. So in other words, gradient vanishes as you move back from the output to the input. So this is the vanishing gradient problem. And because of this, networks fail to learn. Basically, learning means that your weights adapt. So if your weights are not adapting, then it means that your network is not learning. So again, just to mention, W new, W old minus eta into gradient of the loss function. And the gradient of the loss function is based on the gradient of all those activation functions that you have. तो एक्टिवेशन फंक्शन वही आपका नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन एस शेप्ड है. तो जब वो ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा, जिसमें चेंज होनी बंद हो जाएगी. सो डब्ल्यू न्यू विल बिकम इक्वल टू डब्ल्यू जीरो बिकॉज ग्रेडियंट इज जीरो. सो दिस डजंट change. It means your network has stabilized, and in other words, you can say your network is not adapting. So that may become a problem, especially if you have deep networks and you have lots of data. Okay? So that's why the rectified linear unit has been proposed and it has been used quite successfully. Of course, इसके ऊपर भी थोड़े से tweaks लगाने पड़ते हैं, फिर भी सीधा नहीं चलता. You also have the problem of exploding gradients. No, ReLU does not have the vanishing gradient problem, but it can have the exploding gradient problem. तो उसको वो हम typically easily handle कर देते हैं threshold करके. If z becomes very large above some value, हम उसको threshold कर देते हैं. तो इस तरह के छोटी मोटे इश्यूज काफ़ी होते हैं न्यूरल नेटवर्क्स में. आई थिंक वी कांट रियली कवर ऑल ऑफ दोज इन दिस कोर्स हियर. Normalization is another issue which we might again discuss when we talk about transformers. तो layer normalization है, batch normalizations है, वो आपको करनी पड़ती हैं just to ensure कि your network stabilizes or adapts. Yes. So rectified linear unit was proposed primarily to avoid the problem of vanishing gradient. The second advantage, of course, is slightly more computationally efficient than the tangent hyperbolic. ठीक है? No, the gradient is zero, but that's for negative values. Yes, the gradient is zero, but it's for negative values. But we typically ensure that our outputs are positive and we scale them. ये scaling का यहाँ factor आएगा. जो normalization की मैंने बात की है ना, तो normalization would ensure कि your values become positive. जो negatives होंगी वो next time उसके remember this one example at a time. Next example वहाँ value positive आ सकती है. So it might still adapt. For some iteration, it might not adapt. For other iteration, it might adapt. So remember, for any given layer, आपके पास multiple outputs हैं, zk. ठीक है ना? हर node का एक output है zk. So zk, if it is positive, obviously its gradient is
जीरो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेट्स, ग्रेडियंट इज नॉन जीरो, उसके जो वेट्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे। ठीक है। बट जिसके जेड से जेड के जिसका नेगेटिव है उसके वेट्स अपडेट नहीं होंगे उस केस में। ठीक है। बट रिमेंबर दिस इज वन एग्जाम्पल। तो आपने मल्टीपल एग्जाम्पल्स देनी है, आपने बैच प्रोसेसिंग करनी है। जब बैच प्रोसेसिंग आप करेंगे यू विल फाइंड अदर इंस्टेंसेस वेयर जहाँ पहले वो जीरो था या नेगेटिव जेड था, वो अब पॉजिटिव जेड आ रहा है, वो अपडेट वहां हो रहा है। तो आपको कहीं स्टैटिक या आपके पास ब्लॉकेज नहीं हो रही कि आपकी अडाप्टेबिलिटी खत्म नहीं हो रही। तो as you run over your entire data set, your whole network is being updated. ठीक है। So it's again this is uh, part of neural network is empirical. It's not all theoretical. If you follow just theory, then theory would give you कि sigmoid या tangent hyperbolic is better. But this, uh, but empirically we have found that rectified linear units would give you better results with some tweaks, of course. Okay. So the exploding gradient problem, obviously, or exploding value problem. So Z is unbounded in the rectified linear unit. So rectified linear unit will give you a value as Z increases, its value of output value will also increase. Okay. So we don't want to our network to be saturated. So if your output, so remember this A rectified linear unit Z ये आपके पास आ रहा है। ठीक है। So if Z becomes very large, A would also become very large. If A becomes very large, remember this is one value in a feed forward neural net. A आगे जाके उसको आगे फिर large कर देगा अगले लेयर पे। अगले लेयर पे कर देगा this particular node will dominate. तो हम domination को avoid करने के लिए हम Z को usually threshold कर देते हैं, sometimes A को threshold कर देते हैं. So we don't want A to go beyond, let's say 5, 6, 7 or whatever. Again, this is empirical. ऑफन टाइम्स हम ये नॉर्मलाइज करेंगे ए को सारा, जितने भी एज आए एक लेयर के। रिमेंबर दिस इज ए लेयर। हमारे पास A1 है। बाय द वे हमने नोटेशन पूरी डिस्कस नहीं की, बट ये हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस। सो एक पर्टिकुलर लेयर में मल्टीपल नोड्स होंगे। A2, A3 and so on. All of these would then be normalized so that they don't increase significantly. ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ कोर्स रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट का हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है। Either if you are not normalizing, then you put a threshold on A. A की वैल्यू 5 से ज्यादा होगी, just simply cut it off. मतलब मीनिंग दैट के 5 से ऊपर वाली वैल्यू सारी खत्म कर दें। इवन इस 20 उसको 5 कर दें, 25 है तो 5 कर दें, 6 है तो 5 कर दें। So again, you might think कि ये we are kind of moving away from theory, but remember stochastic randomness is important. So ये randomness भी इंक्लूड कर रहा है आपके नेटवर्क के अंदर। रैंडमनेस से भी आपका नेटवर्क की स्टेबिलिटी या लर्निंग एबिलिटी बेहतर होती है। ठीक है। So, so these topics usually would be discussed in a slightly more detail when we you discuss take deep neural networks or deep learning, या even I don't know AI ML में कवर करते हैं कि नहीं करते। AI ML में आपने फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स तो पढ़े हुए हैं आई गेस। ओके। सो लेट मी, ठीक है। So let me ना पहले मैं जरा नोटेशन डिस्कस कर लेता हूँ थोड़े से, देन आई कैन probably take your questions in a better way. Uh, so we said that we have multiple layers in a neural network. Input typically हमारे पास x है, and again I'm writing this as one example, x is a vector. And then we have multiple intermediate layers, जो उनकी output h से भी डिनोट की हुई है बुक में, but I prefer a. ठीक है। a है small a, again a vector. ठीक है। And then the output
बिफोर द एक्टिवेशन फंक्शन जो होगा वो आउटपुट ऑफ कोर्स, सो आई कैन राइट इट इन दिस वे, y prime is some activation function of g. सो हर लेयर का जो आउटपुट होगा बिफोर एक्टिवेशन वो आप z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द समेशन पार्ट। एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करने के बाद वो a हो जाएगा या h हो जाएगा, बुक ने h भी यूज किया, बट एज आई सेड आई प्रेफर एच a बिकॉज कंसिस्टेंट होगा। सो इसको इस सेंस में लिया जाए एंड लेट्स से आई यूज द सुपरस्क्रिप्ट टू डिटरमिन द लेयर, ठीक है, एंड यूज द सेम नोटेशन, सो आई वुड से देन a सुपरस्क्रिप्ट ब्रैकेट में ये लेयर 0 है, ठीक है, एंड देन वी हैव a सुपरस्क्रिप्ट में ये लेयर 1 है, a सुपरस्क्रिप्ट में ये लेयर 2 है, ठीक है, एंड a सुपरस्क्रिप्ट में ये लेयर 3 है, and let's say this is my final layer, so this would also be my y, and a, this would be my x. ये g activation function है। So do you understand the notation here? So input हमारे पास x है, but if you use consistent notation आप इसको a raise a 0 कह सकते हैं। जो हिडन लेयर, पहली हिडन लेयर a1 होगी उसकी एक्टिवेशंस, second hidden layer A2 and so on until the final layer which is let's say in this case A3, और वो आपका आउटपुट होगी y prime और y hat, whatever you want to call it, ठीक है। So if you write it in this way, so हमारे पास इक्वेशंस क्या बनेंगी? So any a, so a for a layer I, अब यह मैंने सुपरस्क्रिप्ट में नहीं लिखा है, wrote it just like this would be some activation function g applied on a weight matrix, now it will be a matrix in general, ठीक है, I multiplied by a I minus 1 plus b I. Yes, the subscript would, because a, b and all of these are vectors. जो subscript ला लेंगे तो you can use them as one element of that vector. So this is vector. G is activation function. So W I've used as a capital. So this is a matrix now. I've just mentioned what it includes. ठीक है, so अब ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है, अब सो लेट मी फर्स्ट मेंशन व्हाट W इज। सो W बेसिकली आपका जो मैट्रिक्स होगा इट वुड बी, सो जो आपका पिछला, सो इसका साइज जो होगा, सो मैट्रिक्स ऑफ साइज, सो रिमेंबर दिस इज W1, सो इट वुड बी ऑफ साइज n, जो पिछला, सॉरी जो नेक्स्ट लेयर का जो साइज था ni बाय n I minus 1, ठीक है। रिमेंबर एन आई माइनस वन आपके पास कॉलम्स हैं और उतने ही आपके पास पिछले इनपुट्स आ रहे हैं ए आई माइनस वन, ठीक है, उसका साइज भी वही है ए आई माइनस वन का, जो एन आई माइनस वन का साइज है, सो दैट्स व्हाई इट विल मल्टीप्लाई प्रॉपरली, एंड ऑफ कोर्स बी वुड बी हैव ऑफ साइज, वुड बी ऑफ साइज आई,
ni. ठीक है. So this is a matrix. So if you multiply w with x and plus add, you will get a vector of size ni. So this vector, so I can write this. It's not. So it's I, not I just denoting the previous layer, the current layer. ठीक है. So आपके पास layers के sizes. So we have n0, n1, n2, n3 and so on. ठीक है. So, and I basically meaning that the ith layer के number of nodes हैं. ठीक है. So these are all number of units in the ith layer. And ठीक है. So it has, so so in other words, you can think of the matrix W as consisting of weight vectors for each of the units in the hidden layer or in the layer I. So let's say if you have 5 units in that layer, then it have 5 rows. And columns, of course, correspond to the inputs to this layer. ठीक है. So आप आपके पास एक कंसिस्टेंट ए की नोटेशन है जो आप यूज कर सकते हैं फॉर थ्रू आउट द लेयर. अब जो इसकी आउटपुट होगी अगले लेयर की i-1 अगले लेयर पे चले जाएगी, अगले लेयर पे चल जाएगी until the final layer where you will get the final output a, which you can consider to be y hat or y prime. So let's take an example and maybe that will help you understand things better. So let's say मेरे पास एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है. ठीक है. तो उसका वो कैब साइज लेट्स से 10,000 है. ठीक है. इसका मतलब है कि each document is represented by a vector of size 10,000. ठीक है. So this is my input. So each input x would be of size 10,000. ठीक है. So what does this mean? N underscore 0 would be 10,000. ठीक है. Of course there is a bias term as well. तो वो भी आपने ऐड करनी है तो +1 कर लें. 1 for the bias. ठीक है. बट यूजली खैर उसको मैं यहाँ ना डालूं. ठीक है. डिलीट दिस. ओके. सो n0 मेरे पास ये हो गया. सो लेट्स से माय नेटवर्क हैज वन हिडन लेयर में मैं उसके यूनिट्स में बताता हूँ n1. लेट्स से मैं इसके यूनिट्स ले लेता हूँ 500. सो माय हिडन लेयर हैज 500 यूनिट्स. एंड लेट्स से दिस इज ए 3 क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. सो n2 जो मेरी आउटपुट लेयर है, आउटपुट लेयर है उसमें 3 यूनिट्स होंगे. सो ये आपके पास एंड्स क्लियर हो गए, राइट? इज देयर एनी क्वेश्चन ऑन दिस? ठीक है. सो जो x है वो हम x जो है, यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ दिस एज a0 if you want to, so that you can make your equation consistent. ठीक है. And now your matrices, weight matrix is w.
सो हमारे पास W सबसे पहला होगा, W1 होगा. बाय द वे ये लेयर का सुपरस्क्रिप्ट में डाला जाता है, बट आई एम समटाइम्स राइटिंग इट जस्ट इन फ्रंट ऑफ इट. बट यू शुड अंडरस्टैंड के बुक में ये सुपरस्क्रिप्ट में डाल रहे हैं. तो इसका साइज क्या होगा? एनीवन क्विकली? दिस इज द वेट में. N2 3. So this is actually, I said we have a three class classification problem. So N2 is the output layer. तो जब थ्री क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, थ्री नोड्स चाहिए सिर्फ. So this is output layer. So one hidden layer and one output layer. And so this is a two layer feed forward neural network. ठीक है. So इसका matrix का size क्या होगा? The first matrix from the input to the hidden layer. ठीक है. So 500 by 10,000. ठीक है. ठीक है. Similarly, what would be B1? B1 would be 500. ठीक है. X आपको पता है, X A0, ये 10,000, 1 2 3. ठीक है. ठीक है. तो ये आपका पहले लेयर कंप्लीटली स्पेसिफाइड हो गई है. एंड यूजली जो फर्स्ट लेयर का फंक्शन होगा G1. सो लेट्स से इट इज टेंजेंट हाइपरबोलिक. ठीक है. लेट्स से मूव ऑन टू द सेकंड लेयर. W2 के साइज क्या होगा? आउटपुट लेयर का साइज है 3/500. B2 would be 3, and then A1, this would be 500. ठीक है. So given these matrices and these values and how to compute them, you already know the equation. The equation in general, as I said before, is AI is equal to some function G of WI. This is a matrix multiplied by X I minus 1 plus BI. ठीक. And this function G applies to each element of this vector that is produced. ठीक है. तो G, remember, ये जो मैंने बीच में लिखा है, so this is actually a ZI. So this is also a vector. इसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा. ठीक है. So you can also write this. ठीक है. Each element of this vector would be applied the activation function. फिर आपके पास A आ जाएगा, and then you repeat this until you reach the output layer. ठीक है. So just to summarize, what are the parameters in this model? All the W's, all the B's. So these are the parameters.
of the model of the neural network. ठीक है? So these are the parameters that you will have to learn from the training data. And you use the stochastic gradient descent approach. And since it's now a feed-forward neural network with multiple layers, you will have to apply the BP algorithm, back propagation algorithm. So direct derivatives आपको हर लेयर के नहीं मिलेंगे, आपको अगले लेयर्स के derivatives आपने derive करने from the from the hidden inner layer के outer layers से हमने derive करने. So any questions? So we already talked about the loss function while we are discussing logistic regression. What the back propagation? Yes. So we have already talked about a loss function for the logistic regression model. Uh, the same loss function is typically used in a feed-forward neural network as well for classification. So can anyone tell me कि binary classification के लिए कौन सा loss function होता है? We discussed this last time और आज आप लोगों ने तैयारी करके आनी थी क्विज के लिए. Uh, I didn't get that. So anyone else? So loss function क्या होता है for okay binary classification cross entropy. Okay. So cross entropy is used, and of course, its extension for multi-class is basically simply called multi-class cross entropy. Okay, and we mentioned very briefly last time that the cross entropy it is identical to maximum likelihood estimate. Okay, so MLE, for those who know about MLE, so it's identical to that. Same cheese, but uh, in this case we are minimizing. In MLE we are maximizing. Okay, a few other things. Actually, there are many other things in your. Yes, that's the question. A few other things, actually, there are many other small things in a neural network. We probably won't be able to go over them, and we should not, because obviously some of these are implementation. Let me just mention a few things. जैसे मैंने normalizations की बात की थी, layer normalization, so that you know the keywords. So oftentimes we need to do layer normalization. So there's also a concept called dropout. Most modern neural network में dropout भी आप implement करते हैं. And then sometimes we also change a loss function by regularization. Exactly. Regularized loss function use करते हैं. ठीक है, उसमें रेगुलराइजर यूजली वेट्स का कोई एडिशन कर देते हैं लॉस फंक्शन में. ठीक है, ड्रॉप आउट मैंने कह दिया. नॉर्मलाइजेशन के बाय द वे मल्टीपल टेक्निक्स हैं. एंड देन ऑफ कोर्स हैंडलिंग वैनिशिंग ग्रेडियंट एक्सप्लोडिंग वैल्यूज हैंडलिंग भी आपको करनी पड़ती है. And then of optimization में various techniques हैं. I talked about adaptive, momentum based, stochastic gradient descent, and there are others as well. So all of these can be used in practice. आपकी implementation में ये सारे options available होंगे.
Okay, one last thing before we move on to evaluation. So, what is the benefit of having additional layers? Remember, logistic regression में सिर्फ इनपुट होता है और आउटपुट होता है, हिडन layers नहीं थे. What is the advantage of adding those layers? So, why not just go ahead and use logistic regression? Anyone has an idea? ठीक है. So the so we are trying to include nonlinearity. Yes. अच्छा, complex pattern किसना याद करेगा? By increasing the number of parameters. Okay, so that is one of way of doing it, because parameter just जितने ज़्यादा increase करेंगे आपके model की capacity बढ़ जाएगी. But of course you also know from machine learning कि जितनी model की capacity ज़्यादा होगी overfitting के chances भी ज़्यादा हो जाते हैं, right? Unless you have lots of data. So neural networks are very powerful because they have lots of parameters, but then you should be careful about overfitting. और जो मैंने ऊपर थोड़ी सी techniques बताई हैं, they all kind of handle overfitting directly or indirectly. Even layer normalization होगी आपकी, regularization does it directly, but layer normalization होगी या dropout होगी, they do it indirectly. ठीक है. Okay, so okay, so the main reason is basically we are kind of uh, by adding additional intermediate layers, we are finding embedding spaces in which the problem is more clearly defined. This is in very layman terms. So remember जो मैंने ऊपर example दी थी, input space हमारे पास क्या थी? 10,000 थी. This was input space, right? So 500 मैंने लिया था hidden layer. So this is my embedding space or hidden space. And then of course 3 was output. So output space, which is of course in this case binary, sorry, in this case discrete. तो ये classification problem थी, ठीक है ना? Continuous नहीं थी. Of course outputs continuous थी, फिर हमने इसको discretize कर लिया using the softmax. So this 500 embedding space, ये automatically हम learn कर रहे हैं through our data. And given our training data and our model, which has lots of parameters, it is able to learn such spaces in between such that our problems become better classifiable. In this case, classification, but in general, better clearly defined. Okay? And we are doing this automatically. हमने कोई hand crafting नहीं की, हमने कुछ भी नहीं किया. We let the algorithm decide कि वो 500 features क्या होंगे that will help us better classify a problem. जी, so in classification, मतलब that's the easiest scenario कि linearly separable हो जाए, ठीक है? But that problem obviously may not be possible in all cases. But we would like still it to be clearly defined. So linearly separable, for those who have done machine learning आप पढ़ते हैं. But हर problem linearly separable नहीं हो सकती. But still, by projecting onto nonlinear embedding spaces, maybe even multiple of them, we might get better classification. It still may not be linearly separable. Okay, is that clear? The ideal scenario is कि linearly separable हो जाए तो well and good, but still we are trying to get a better space. ठीक है, so is that clear? Any questions?
Okay, now very quickly, let's how do we evaluate classifiers, text classification? So some of this would be refreshed for many of you. ठीक है? Uh, First of all, if you remember, हमने एक loss function भी define किया था, which was cross entropy. So one question is, why don't we just use cross entropy to evaluate our classifiers? The answer is we can use it, but the problem is that cross entropy is not very very कह लें कि interpretable by humans. So we need other measures as well. So So cross entropy can be used for evaluating classifiers. Either it's binary cross entropy or multi-class cross entropy हम use कर सकते हैं. एक single number दे देगा. Smaller number would mean that your class uh, you're talking about mean squared error. So mean squared error is not recommended for classification, for regression. And again, this is something that when I used to teach machine learning, हम ये clearly बताते थे MSC classification के लिए क्यों नहीं बेहतर through figures. तो remember आपके पास actual output y prime है और ट्रू आउटपुट y है. MSC क्या होगा इसका? ऑफ कोर्स लेट्स से ये दोनों वेक्टर्स हैं तो ऑफ कोर्स आप ट्रांसपोज करके y प्राइम माइनस y, ठीक है, एंड यू कैन डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ एग्जांपल्स. तो ये आपका पास MSC आ जाएगा. बट दिस इज not helpful because y is a continuous number, y prime is a continuous number, y is in general a binary number, और y prime जो है वो काफी बड़ा भी हो सकता है. ऑफ कोर्स नॉर्मलाइजेशन के बाद 0 और 1 के दरमियान होगा, बट लेट्स से z के यूज करें तो वो काफी बड़ा हो जाएगा. बट अगेन वाइल भी यूज करते हैं, इट कैन बी वेरी लार्ज, इट कैन बी वेरी स्मॉल. सो दिस जनरली डज नॉट गिव गुड रिजल्ट्स. वी वांट समथिंग दैट इज बेटर एंड क्रॉस एंट्रोपी इज बेटर. सो MSC जनरली रिग्रेशन के लिए यूज करते हैं, क्लासिफिकेशन के नहीं कर सकते, नहीं करते बिकॉज इट डजंट गिव गुड रिजल्ट्स. सो जस्ट वेरी इंट्यूटिवली लेट्स से द इशू इज, लेट्स से y प्राइम मेरे पास आ रहा है 0.1, ठीक है, और ये क्लास y इज इक्वल टू 1 थी, लेट्स से, ठीक है. So obviously this means that this class has been misclassified, ठीक है ना. This example has been misclassified. हम इसकी misclassification के strength को बढ़ा रहे हैं. So there might be another scenario. Y prime आपका let's say 0.45 है और यहाँ भी y is equal to 1 है. Again ये misclassification है, but यहाँ हमने इसकी error को कम रखा है. But this error we are taking in the sense of Euclidean distance between these two things. But both of these variables are more closer to random Bernoulli variables. So for this case, entropy is a better measure rather than mean squared error. ठीक है. So regression के लिए MSC, MAE, RMSE यूज किया जाता है. For classification, cross entropy, as well as for more practical purposes, we have a bunch of other measures. So accuracy है आपके पास, error rate है, both of them are the same thing, ठीक है. Then we have of course recall, precision and F measure, ठीक है. And then of course इन्हीं की variations हैं, for example uh, sensitivity and specificity. Sensitivity actually is recall,
specificity is 1 minus false positive rate. So true positive rate भी हो सकता है, false positive rate भी हो सकता है. So all of these are possible. So ये binary के लिए तो ये काफी हैं. So कुछ मैंने ये measures इस slides में दिए हैं. I will share them later. I don't think I will go over them in detail. So when you have a binary classification, you typically create a confusion matrix, which is a 2 by 2 confusion matrix. So in this particular contingency table, the rows, so the columns are, so the columns are predicted class, the rows are the actual class, and then based on what your classifier does, you can get true positives, false negatives, and true negatives. So these are actual counts. So if you have n examples in your test set, uh, तो वो n examples में आपने देखना है कितने वो उसने correct किया. Positive could be any one of your class that you feel is important. Let's say spam, आप उसको class 1 कह रहे हैं, या ham class 1 कह रहे हैं, या positive sentiment को class 1 कह रहे हैं. तो if they match, then that's true positive. If not, then it could either be false positive or false negative. It will be false positive if your model says it is positive while it was actually negative. ठीक है. Similarly, other way around for that, and then we have the true negative. So यहाँ से फिर आप सारे measures बाकी निकाल सकते हैं. So यहाँ मैंने measures दिए हुए. Accuracy है, for example, error rate है. Error rate is 1 minus accuracy. Then precision, recall, and then we also have what is known as specificity, which is true negative rate. So it is false positive. तो ऊपर ऊपर बेसिकली ट्रू नेगेटिव आता है, नीचे टोटल नेगेटिव्स आते हैं. ठीक है. So true negative rate, the total negatives in a data set. And then of course false positive rate है. False positive rate is also equivalent to 1 minus specificity. Obviously, because 1 minus 2 negative rate would be false positive rate. And then of course आपके पास F measure है, which is the harmonic mean of precision and recall. So all of these measures are possible for binary classification. ठीक है. बाइनरी के लिए रॉक कर्व भी काफ़ी पॉपुलर है, which is receiver operating characteristics curve. So this curve plots true positive rate with false positive rates. So usually false positive rate, by the way, false positive rate is 1 minus specificity, true positive rate is recall या sensitivity. Multiple नाम्स भी हैं इनके measures के. So the curve is given here. ठीक है. So रॉक कर्व इस तरह बेसिकली होता है. सो एक्स एक्सिस पे लेट्स से एफपीआर है, फॉल्स पॉजिटिव रेट, वाई एक्सिस पे ट्रू पॉजिटिव रेट, एंड यू प्लॉट दिस लाइन फॉर वेरियस ऑपरेटिंग कंडीशंस ऑफ योर मॉडल. अब ऑपरेटिंग कंडीशंस किस तरह निकलेंगी? फॉर मोस्ट मॉडल सिंपली थ्रेशोल्ड चेंज करने से आपका वेरिएशंस आ जाएंगी. जैसे न्यूरल नेटवर्क में बाइनरी क्लासिफिकेशन मैंने क्या कहा था, इफ प्रोबेबिलिटी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5, वी से इट इज क्लास 1. हम यहाँ पर थ्रेशोल्ड 0.5 को चेंज करेंगे. सो विल वेरी इट फ्रॉम 0.1 टू 0.9, और हर दफा हम टीपीआर एफपीआर निकालेंगे और ये प्लॉट हो जाएगा. ठीक है. सो यूजली दिस प्लॉट विच इज हायर वुड बी कंसिडर्ड बेटर. ठीक है. सो आई थिंक इन द सेकंड प्लॉट ऑन द राइट यू विल सी मल्टीपल कर्व्स. तो लेट्स से आपके पास 3 क्लासीफायर हैं, सारों के सेपरेट कर्व्स होगा. जो कर्व सबसे ऊंचा है दैट वुड बी कंसिडर्ड बेटर. सो
इस नोशन को एक नंबर से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, विच इज ऑफन कॉल्ड एरिया अंडर द रॉक कर्व, AUC, एरिया अंडर द रॉक कर्व. सो इफ यू गो बैक हियर, तो ये जो रॉक कर्व जो है, इट्स बेसिकली TPR, FPR. You have a curve like this. So the area under that curve, and sometimes the area under that curve and the diagonal line, ठीक है, is considered the AUC. ठीक है, सारा भी आप ले सकते हैं, but sometimes under along the diagonal line. But usually सारा ले लें तो it will vary from 0 to 1. But usually we will consider a value greater than 0.5 as valid, because diagonal means almost random classification. We will want something that's better than diagonal. So उसका एरिया 0.5 से ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, so AUC 0.5 and higher would be considered better. Anything close to 1 would be very good. So for binary classification, you have tons of measures. So all of these measures are often used in practice. Accuracy generally इतना popular नहीं है text classification के लिए. We restrict ourselves more to precision recall and F measure. ठीक है, usually this is because of unbalanced data sets and classes in our data set. So coming to multi-class classification, and then of course, as I mentioned, ROC and AUC. So all of these are commonly used for binary classification. Okay, what about multi-class classification? So इसमें obviously accuracy आप use कर सकते हैं, but again accuracy generally is less recommended. It's not recommended. Although एक measure आप कर सकते हैं, but why is it not recommended? So usually class imbalance होती है आपके पास. So accuracy would kind of mislead you. So for example, आपके पास let's say प्रॉब्लम है साइबर क्राइम डिटेक्शन की. ठीक है, सो द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ, एंड लेट्स से 3 क्लास प्रॉब्लम ले लेते हैं. हेट है, ठीक है, हेट के लेट्स से मैं कहता हूँ कि आपके पास 5% थे, तो लेट्स से फिर ऑफेंसिव लेट्स से 3%, एंड देन नॉर्मल 90, क्या होगा, 5 + 8 92%. ठीक है, so if you use accuracy and if your classifier has just blindly labeled all examples as normal, ठीक है, all examples as normal, you still get an accuracy of 92%, which is kind of misleading because it has misclassified every hate example and every offensive example. ठीक है, so accuracy generally is not recommended, especially if you have imbalanced data, even if it is binary. बाइनरी के लिए भी मैंने कहा था कि जनरली टेक्स्ट के लिए कम यूज होता है, प्रिसीजन रिकॉल और एफ मेजर ज़्यादा होता है. फॉर मल्टी क्लास इट्स इवन मोर ए प्रॉब्लम, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल. ठीक है, ओके ओके. So I think this will probably be the last thing, and then we stop. Because, मैं अभी स्लाइड्स पे आ जाता हूँ यहाँ. आई जस्ट वांटेड टू शो यू. ठीक है, so if you have more than 2 classes,
So you can always build a confusion matrix. Of course, this confusion matrix would not be 2 by 2. It would be, of course, the number of classes by the number of classes. अगेन आपने डिसाइड करना है कि रोज में आपके पास गोल्ड स्टैंडर्ड है या कॉलम्स में है, एंड अल्टरनेटिवली दूसरी जगह पे आपके पास प्रेडिक्टेड वैल्यूज होंगी. सो इसमें यहाँ आपको एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स नजर आ रहा होगा. ऑफ कोर्स दिस इज ए पिक्चर. सो यू हैव थ्री क्लासेस. एक अर्जेंट है, एक आई गेस नॉर्मल है, और एक स्पैम है. ठीक है. सो इट्स ए क्लासिफिकेशन, ईमेल क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. थ्री क्लास प्रॉब्लम को कुछ नंबर्स दिए हुए हैं. सो इफ आई रिकॉल प्रॉपरली, लेट मी सी, मैं निकाल लेता हूँ. मैं डोंट रिमेम्बर ऑफ हेड. या मुझे कोई सजेस्ट कर दे, अर्जेंट अर्जेंट का काउंट क्या है? कैन समवन टेल मी? सो एट है. ठीक. ठीक है, सो एट है. ठीक है, सो अर्जेंट, हमारी टीपी जो है फॉर अर्जेंट इज एट. सिमिलरली इफ यू लुक एट व्हाट इज फॉर नॉर्मल एंड नॉर्मल, एंड व्हाट अबाउट एंड स्पैम टू स्पैम? 100 आई गेस. 200. ओके. सो 260 एंड 8. ठीक है. सो So in this case, and the normal approach is we create a precision recall or compute precision recall for each class separately and then take the average. This particular approach is called the macro averaging. Micro averaging भी होती है, but for text classification, many multi-class classification वो कम commonly use होती है. Macro average ज़्यादा use होती है, again because of the imbalance problem. So macro averaging क्या होगी in this case? So आपके पास urgent के लिए आपने recall निकालना है. अर्जेंट में ऑफकोर्स टीपी करेक्ट करेक्ट क्लासिफिकेशन इज एट. एट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ करेक्ट क्लासिफिकेशन कितनी है? सो एट प्लस आई थिंक नीचे आपके पास एट के नीचे नंबर क्या आ रहा है? अर्जेंट ट्रू क्लासेस कितनी है? एट प्लस, सो 16 है. ठीक है ना. सो सो वी विल, इसका रिकॉल होगा 8/16 विच इज अबाउट 50%. ठीक है. इसकी प्रिसीजन होगी 8 डिवाइडेड बाय लेट से, उसका जो टोटल हमने अर्जेंट निकाला है वो 10+1 है शायद मेरे ख्याल से. सो 8/, आपके पास 10+1 वुड बी 11+19, 8/19. वो रिकॉल हो जाएगा. तो हर एक का आपने सेपरेटली प्रिसीजन रिकॉल निकालना है और फिर आपने एवरेज ले लेना है, या सेपरेट भी आप एनालाइज कर लें और एवरेज भी ले लें. सो दिस इज द बेस्ट अप्रोच. माइक्रो एवरेजिंग नहीं करेंगे. माइक्रो एवरेजिंग में क्या होता है कि आपने सिंपली 2 by 2 मैट्रिक्स बनाना है, इवन इफ योर क्लास इज 10 by 10. करेक्ट इनकरेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट, तो टू में कर दें. इफ देर इज करेक्ट, अर्जेंट अर्जेंट करेक्ट कर लिया, जैसे यहाँ एट है. बाय द वे इसका हम जब माइक्रो एवरेजिंग का टेबल बनाएंगे, 8+60+200 एक सेल में आ जाएगा. 200+60, 260, 268 एक सेल में आ जाएगा, और बाकी सारा जो उस साइड पे है वो सारा उस सेल में आ जाएगा, नीचे वाली साइड पे सारे इस सेल में आ जाएगा. तो बट एज यू कैन सी, वो जो 200 है, इट विल काइंड ऑफ बायस योर रिजल्ट्स. 8 और 60 का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट 200. सो वी टिपिकली डू एज ए सेड मैक्रो एवरेजिंग. हर एक का सेपरेट निकालेंगे. 8 का सेपरेट निकालेंगे, 60 का सेपरेट निकालेंगे, 200 का सेपरेट निकालेंगे, सेपरेटली भी एनालाइज कर लें, एंड देन डू एन एवरेज. सो दिस इज कॉल्ड मैक्रो एवरेजिंग. ठीक है. तो यहाँ दोनों ऑप्शंस बताई हुई है, मैक्रो भी और माइक्रो भी, बट मैक्रो इज प्रिफर्ड. प्रीवियस केस में सारों के लिए सेपरेटली जो निकाले हुए थे प्रिसीजन रिकॉल, वो आप एवरेज कर दें फॉर ऑल थ्री क्लासेस. दैट विल गिव यू वन नंबर, वन प्रिसीजन, वन रिकॉल, वन एफ मेजर. ठीक है.
ठीक है, सो दैट इज एसेंशियली इट फॉर टुडे। आई थिंक आई विल नॉट कंटिन्यू। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर वर्ड टू वेक की जो मोटिवेशन है वो स्टार्ट करेंगे, डेंस एम्बेडिंग्स की मोटिवेशन स्टार्ट करेंगे, एंड देन विल मूव क्विकली टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ हाउ टू कंप्यूट इट। नहीं, आज का लेक्चर नहीं इंक्लूड होगा, क्विज में नहीं होगा। ठीक है, बट जो भी अगला क्विज होगा उसका यहीं से शुरू होगा। ठीक है, तो ये मॉडल इवेल्युएशन की स्लाइड्स हैं, ये मेरे किसी और कोर्स की थी, बट आई शेयर इट विद यू। You should go over them. Most of this should be revision for most of you. And पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन की पहली स्लाइड्स अपलोड की हुई हैं, न्यूरल नेटवर्क्स की मैं कर दूंगा, बट उसमें बीच वाली कुछ चीज़ें हमने स्किप की हैं। फॉर एग्जांपल, वी डू नॉट डिस्कस और वी आर नॉट डिस्कसिंग द इश्यू ऑफ एक्सऑर प्रॉब्लम इन दिस कोर्स। वी आर आल्सो नॉट डिस्कसिंग द लर्निंग और द बीपी एल्गोरिथम फॉर न्यूरल नेटवर्क्स। ये दो चीज़ें आपकी मैं प्रॉब्लली न्यूरल नेटवर्क की स्लाइड से डिलीट करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, द रेस्ट इज इंक्लूडेड। न्यूरल नेटवर्क इज चैप्टर 6, लॉजिस्टिक रिएक्शन चैप्टर 4, और बीच में चैप्टर 5 जो है वो वर्ड टू वेक का है, डेंस एम्बेडिंग्स का, वो हम पे नेक्स्ट आ रहे हैं।